Bonjour mes étudiants. Hope you all are doing very well. So in this lecture today, we are discussing your culture lesson 8. Okay, lesson 8. The name of the chapter is Le Environnement. All right, so let's see. So let's start with the chapter. Dennis a un devoir à faire. Dennis has homework to do. Son professeur lui a dit d'écrire un petit article sur la protection de l'environnement. So his professor asked him to write a small article on the protection of environment. Dennis. Now Dennis says, je dois écrire quelque chose sur l'environnement. I must write something on the environment. Mais je ne sais pas quoi écrire, but I don't know what to do. Okay. So Pauline, as-tu une idée? Pauline, do you have any idea? I have to write a small article, but I don't know what to write. Do you suggest me something? So what Pauline says, she said, bien sûr, of course, il faut qu'on fasse des efforts pour protéger notre planète. It is necessary that we must do efforts to protect our planet, our environment. Nous pouvons, for example, réduire le gaspillage. We must. What we have to do? We must réduire. Réduire means to reduce. Okay, réduire means to reduce. We must reduce. What we must reduce? Gaspillage. Gaspillage means बच्चे wastage. Okay, gaspillage means wastage. We must reduce the wastage. So Dennis say d'accord, on doit réduire l'usage de l'eau et de l'électricité. So Dennis said, okay, we must reduce the usage of water and electricity. Pauline says, tu as raison, you are right. Il est nécessaire, it is necessary that we can reduce le réchauffement de la Terre. It means we must reduce global warming. Okay, we must reduce global warming. So Dennis says, ah bon, comment, how? So Pauline says, quand nous faisons trop de gaspillage, when we do a lot of wastage, nous y contribuons. E means there. We contribute there indirectly also. See, everybody, almost every person is contributing directly or indirectly for the responsible for the global warming, right? So that's what Pauline says. Dennis says, so I like to say that we must be conscious. Okay, हमें और ज़्यादा aware हो जाना चाहिए. J'ai vu ma mère. I saw my mother arroser. Arroser is to water. I saw my mother water the garden, jardin's garden, le soir in the evening to conserve the l'eau. So what Dennis says, Dennis बोलता है कि हाँ मैंने अपनी मामा को देखा है वो शाम के वक्त पौधों को पानी देती है ना, ताकि वो वाटर को कंजर्व कर सके. क्योंकि देखिए दिन में एकदम धूप में अगर हम पौधों को पानी दे रहे हैं 2 मिनट्स में आप देखेंगे ना एकदम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो शाम को देते हैं तो धीरे धीरे प्रोसेस होता है. क्योंकि हमने स्टार्ट किया पानी देना, जब तक मैं सारे प्लांट्स को देके वापस आई मॉर्निंग के टाइम पे मैंने देखा अरे फर्स्ट वाला तो सूखा पड़ा है, मैंने तो उस पर पानी नहीं दिया. तो कई लोग क्या करते हैं फिर से दोबारा डाल देते हैं. तो वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए डेनिस बोलता है हाँ अच्छा तभी मेरी मम्मा शायद शाम को पानी देती है. ओके. Pauline says, dans ma famille, in my family, on ferme. Ferme, ER verb है, which means to close. So, Pauline बोलती है, in my family, we close the robinet. Robinet is beta tap. T-A-P. Tap. We must close the tap when it is not needed. Besoin is need. It is not required, it is not needed. जब जरूरत नहीं होती हम टैप को बंद कर देते हैं. डेनिस बोलता है merci beaucoup, thanks a lot, j'ai maintenant, I have now beaucoup d'idées, a lot of ideas pour mon article, for my article. Je souhaite, souhaite means I wish qu'on comprenne l'importance de la protection de l'environnement. So what he said, I wish that we understand the importance of protection of the environment. Okay, I hope chapter समझ आया होगा बच्चा. So let's see. Now fill in the blanks. On m'a demandé le numéro de téléphone. ये आपको पैसेज के बेसिस पे ही आपको बेटा पढ़ने हैं. Okay. One must ask the telephone number of the professor. Mais je n'ai avec aucun. But I have
I have, you can say I have no idea. So in the first fill up, you can write idea. I have no idea. All right. Now, second is il faut absolument éviter le dash de temps. It is necessary to evite. Evite means to avoid. It is necessary to avoid dash of time. So कौन सा वर्ड हमने अभी पढ़ा जो यहाँ पे फिट हो सकता है? It is necessary that we must absolutely avoid the gaspillage, wastage. Okay, gaspillage du temps, de temps. Okay. La sœur Anne. Anne का मतलब होता है बच्चों elder, बड़ी sister. Okay. The elder sister explique dash a word to her small brother. Elder sister ने क्या समझाया? We can write le usage. Okay. Elder sister ने usage समझाई. All right. And last, oh napa. We don't have dash the stilo. We don't dash this pen. So as it is not working. So we can write, we don't need oh napa besoin. Okay. Besoin. Right. I hope it's pretty much clear to you all. Now, donner la form verbal. Verbal form means आपको verb लिखनी है. Nominal form दी is given. आपको verb लिखनी है. So, la protection से protéger जो आपका chapter का भी नाम है. Second, la réduction आपने हमने पढ़ा था chapter में. Réduire is the verb. Then réchauffement से réchauffer and then le gaspillage से gaspillage. Okay, so ये सारी verbs आप लोग लिख सकते हैं बेटा. ओके अब आगे चलते हैं इस चैप्टर में. व्हाट इज दैट? देखिए ये जो इतना बड़ा पैसेज लिखा हुआ, इतना बड़ा पैराग्राफ है ये, और नेक्स्ट पेज पे भी इवन ये मैंने क्वेश्चन आंसर्स में बेटा इसको मैंने इजी वे में कंपोज कर दिया, तो हम वहां पर देखते हैं. ठीक है. उसके बाद ग्रामर पार्ट इज देयर. अभी हम ग्रामर नहीं कर रहे हैं, आगे चलते हैं. ओके last page, it is also very important. What does it means? Global warming. Okay. Le usine की pollue. Usine का मतलब लिख लीजिए बच्चों. What does usine means? Factories. Okay. It means factories. Factories that pollute. Then les voitures qui pollute. Cars that pollute. Renewable energy. ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा. ठीक है. क्या लिखा हुआ है इसमें? देखिए ये ना मैचिंग में आपसे कल्चर के मैचिंग में पूछ लेंगे. रिड्यूर. रिड्यूर मीन्स से श्वाजीर. आपने साइंस एसएसटी में पढ़े होंगे ना 3 आवर्स. अब 5 आवर्स हो गए, बट फ्रेंच में अभी हमने 3 आवर्स ही करने एज पर अवर ऑन्ट्रजन. सो रिड्यूर को अगर मैचिंग में आएगा तो आपको किससे मैच करना है बेटा? श्वाजीर. इट मीन्स टू चूज. रेयूटिलिजे. इट मीन्स इकोनॉमिजे, विच मीन्स टू सेव. Okay, and last is recycle. It is to trier. Trier means to sort. Okay, and last is protection of the nature. I hope chapter is clear to you. So अब हम इसके question answers देखते हैं कि अब तक कैसे question answers आए हैं and how we have to attempt in the exam. Question 1 says, how can we protect our environment and our planet? Okay. So, to save our planet, it is necessary to reduce the wastage of water and electricity and other natural sources. Second, plant more and more trees and arrêter. Arrêter means to stop. Stop deforestation. It's again very easy. Jeter. Jeter is an ER verb which means to throw. Throw le déchet. Déchet is your garbage. Okay. Throw the kura, your garbage, in the poubelle. Couvert. Poubelle means बच्चे dustbin. Okay. And couvert means covered. So throw the garbage in a covered dustbin. Then ne pas jeter les déchets. Do not throw the garbage in the rivers. Okay. Then protect the biodiversity. We must reduce the global warming and réchauffement climatique. ठीक है. हमें अपनी climatic conditions को भी improve करना चाहिए. तो ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स मैंने लिखा है. एग्जाम में 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है, आप एनी 4 यू कैन राइट, you will get full 2 on 2. Okay. All right. Next, question 2 says, how can we conserve the law? How can we save water? So हमने क्या पढ़ा था चैप्टर में? Au per a rose, we can give water to the garden in the evening. शाम के टाइम हम लोग पानी दे सकते हैं to conserve the water, and we must close the tap when it is not required. जो एनसीईआरटी में चैप्टर में था, as it is हमने
इसमें लिख देना है। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन 3 सेज हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये भी हमने पढ़ा था, पॉलिन ने बोला था कि व्हेन वी आर डूइंग टू मच ऑफ वेस्टेज वी आर इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन 4 सेज कैस्क से प्रोटेजे ल एनवायरमेंट। इतना बड़ा नहीं है, मैंने इंग्लिश में भी लिखा है। ये चैप्टर थोड़ा सा, इसमें न्यू वर्ड्स हैं, थोड़े से ट्रिकी वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट नहीं है, बट एक एक करके लर्न करेंगे इजीली हो जाएगा बेटा। ठीक है, और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसी में से दे विल आस्क यू द क्वेश्चन आंसर्स और इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैचिंग। ठीक है, so what is protecting the environment? Se proteger notre source de nourriture. Nourriture means food and potable means drinking water. It is about protecting our source of water and food. All right, synon means otherwise, otherwise tooth means all or everything. All the pollution will finish और वी कैन फाइंड इट वन डे इन अवर फूड। देखो, अगर हम प्रोटेक्ट ही नहीं करेंगे अपने एनवायरनमेंट को, तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, हम वहीं से हमें फूड मिल रहा है, तो अगर हम वहीं पे रोड्स बना रहे हैं, सारा का सारा पोल्यूशन बेटा वहीं पे जा रहा है ना, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारे थ्रू आ रहा है, तो हमें बहुत जरूरी है ये रोकना। ओके, नाउ क्वेश्चन 5 सेज व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। आपने पढ़ा होगा साइंस हिस्ट्री में, सेला वेरिटे द स्पेस एनिमल एवेजे ताल डोला नेट्यूर। It is a variety of animals and plant species in nature. Okay. Question 6 says pourquoi. Pourquoi is why. Why we must protect the environment. क्यों environment को हम protect करें, है ना? So what I have written, pour assurer la survive et donne l'avenir. L'avenir means future of the humanity. Il est dispensable de la protéger l'environnement to ensure the survival and therefore the sake of humanity, the future of humanity. It is essential to protect the environment. Okay. Now, question 7 says, protéger l'environment. Does it involve everyone in the world? हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सेम आंसर यही लिख सकते हैं कि यस, फॉर survive for the sake of survival and humanity and future, we everybody must be responsible to save the environment. उसके बाद मैंने एक लाइन और ऐड करी है, for that everybody must work together. एवरीबॉडी मस्ट वर्क टुगेदर। ठीक है, यहीं तक लिख लीजिए, यू विल डेफिनेटली गेट 2 मार्क्स। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है, बस लास्ट में एक लाइन आई हैव एडेड एक्स्ट्रा। क्लियर है बच्चे? ओके, क्वेश्चन 7। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन 8। D'après le text, as per the text, which is the subject on which the article must be written by Dennis. Dennis को कौन से टॉपिक पे आर्टिकल बोला था, है ना, फर्स्ट लाइन पढ़ी थी, उसने बोला था कि as per the text, according to the text, Dennis must write a small article on the protection of the environment. Okay. Question 9 says, qu'est-ce que vous comprenez par protéger l'environnement? अभी हमने पीछे भी जो क्वेश्चंस देखे हैं, उनमें से भी आप सेम लाइंस लेके फ्रेज कर सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट? ठीक है, तो हमने जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चंस देखे थे, हम उनको मर्ज भी कर सकते हैं बेटा। से प्रोटेजे नोत्र सोर्स द नोरिथियर, अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट में कि हमें, और सेकंड थर्ड क्वेश्चंस में भी हमने पढ़ा था, हमें अपने खाने पीने की जो चीजें हैं, उनका जो सोर्स है, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हमें एयर की जो क्वालिटी है, क्योंकि हम आजकल ब्रीदिंग इश्यूज इतने हो रहे हैं, और दिल्ली जैसे सिटी में तो सबसे ज्यादा ब्रीदिंग इश्यूज हमें सुनने डेली मिल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी हो रहे हैं, तो हमें एयर की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना चाहिए। थर्ड, हमें क्लाइमेट, क्लाइमेट आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा इस साल क्लाइमेट ऐसे चेंज हो रहा है कि पूछो ही मत, तो क्लाइमेट को भी हमें प्रिजर्व करना है। एंड इट इज ऑल्सो टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी इन विच वी आर। ओके, all right, question 10 says why it is necessary to protect the source of meal and your drinking water. तो अगेन सेम क्वेश्चन है, हम वही लिखेंगे, हमें इसीलिए सेव करना है क्योंकि जो भी चीजें हम खा रहे हैं, दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम नेचर। अगर नेचर को ही प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो सब हमारे थ्रू ही हमें ही मिल रहा है, और हम उसको
अब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, तो वो गलत है। हमें तभी इतनी ज़्यादा आजकल बीमारियां देखने को मिल रही हैं, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, तो हमें इन सब चीज़ों को एक दिन में कंट्रोल नहीं होगा, बट डेफिनेटली हर एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल होके स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। Okay, question 11 says why it is necessary to protect the air. Again, air को क्यों protect करेंगे? It is necessary to protect the air because the air is absolutely uh, responsible for our survival. Air के बिना कैसे survive करोगे? Okay. Nous ne pouvons pas survivre plus de quelques minutes sans respirer. बिना एयर के हम कुछ ही मिनट्स तक सर्वाइव कर सकते हैं, दैट्स इट। और इतनी गंदा एयर है, उसमें बीमारियां हो रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो कैसे सर्वाइव करेंगे? बहुत डिफिकल्टी हो रही है, तो हमें एयर की क्वालिटी को डेफिनेटली इम्प्रूव करना है। क्वेश्चन 12 सेज हाउ कैन वी कंजर्व द क्लाइमेट। अगेन, क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करेंगे? आप इसमें ये भी लिख सकते हैं एयर वाला, ठीक है। उसके बाद व्हाट आई हैव रिटन, वी कैन कंजर्व द क्लाइमेट बाय रिड्यूसिंग द रिफ्यूजल ऑफ द गैसेस दैट अफेक्ट द अर्थ। अर्थ पे जो हम इतनी ज्यादा गैसेस यूज कर रहे हैं, उसको हम धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन 13 आपसे पूछ सकते हैं, अरेते मीन्स टू स्टॉप, हाउ कैन वी स्टॉप द ग्लोबल वार्मिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग कैसे कंट्रोल करेंगे या स्टॉप करेंगे? ल्यूटे कॉन्ट्र ला डिफोरेस्टेशन, ल्यूटे इज टू फाइट, फाइट अगेंस्ट डिफोरेस्टेशन। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखे थे ना, उसके कुछ पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, स्टॉप डिफोरेस्टेशन वो पॉइंट था, सेम पॉइंट आप इसमें बेटा लिख सकते हैं। रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ द एनर्जी, बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दो एनर्जी का कंजम्पशन। उसके बाद यूज़ द ग्रीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आजकल वैसे भी इलेक्ट्रिक, हमारी गवर्नमेंट भी स्टेप्स ले रही है कि ज़्यादातर इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा फर्क पड़े। हम एकदम से ही सब कुछ नहीं कंट्रोल में आ जाएगा, तो धीरे धीरे एवरीबडी इज टेकिंग स्टेप्स। ओके, क्वेश्चन 14 says what do you understand by the term recyclage। तो हमने अभी लास्ट पेज पे पढ़ा था, the recyclage से the process, it is a process where there are three etape, etape means stages, okay, three stages are there, reduire to reduce, reutilize to reuse and to recycle। और वही मैंने आपको बोला था, मैचिंग में पूछ लेंगे, what does reduire means? It means to choose, reutilize means to save and recycle means to solve। Clear है बच्चा? Okay, question 15. According to the text, name two things which are responsible for the global warming. Text के according, text में नहीं था, last page था ना pictures वाला, pictures पे मैंने आपको बताया था, वहां पर लिखा हुआ बेटा you seen word was there, मैंने लिखा था factories। So factories and cars से जो pollution आ रहा है सबसे ज्यादा, वो global warming को क्या कर रहा है, वो responsible है, ठीक है। Okay, question 16 is which is the form of complete ENR। अच्छा, ENR की फुल फॉर्म दे में आस्क यू, आपको पता होनी चाहिए, एनर्जी रिन्यूएबल, और इसका एक एग्जांपल पूछ लेंगे, तो सोलर एनर्जी यू कैन राइट ल एनर्जी सोलर, ठीक है। आई होप चैप्टर क्लियर होगा बेटा। 16 क्वेश्चंस आर देयर, इसको धीरे 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 लर्न कर लीजिए, अभी कर लीजिए, टाइम नहीं है, एग्जाम से पहले एक दिन का ही ब्रेक मिलेगा, उसमें नहीं होगा, अभी वी हैव 3 मंथ्स टाइम, उसी में कंप्लीट करके रखिए, ठीक है। नहीं लर्न होता, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, लिख लिख के लर्न कीजिए। और इतनी फ्रेंच आती है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अपने आप से कुछ भूल भी जाओ, रटना नहीं है, लैंग्वेज है, यू कैन फ्रेम सेंटेंसेस, इतना तो लिख सकते हैं ना, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, स्टॉप डिफोरेस्टेशन, डू नॉट थ्रो द वेस्ट इन द रिवर्स, ठीक है, ये सब खुद से बनाइए बेटा। ऑलराइट, चलिए ठीक है।